Assalamu alaikum. Hope so you all are very fine and having good time. Um, Today the video I'm making it's about how to write problem statement. आज का जो वीडियो है ये इस बारे में है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है और कैसे ठीक है. When you are writing proposal or when you are working on synopsis of your research work, if you are a research student, then uh, of a thing you have to include your synopsis or I can say synopsis or proposal. I think you need to include a problem statement. Problem statement is kind of very significant part of your research document. Actually, the problem statement discusses what the actually problem is. What is the research gap you have found out? ठीक है. आप बहुत सारा लिटरेचर स्टडी करते हो फॉर व्हेन यू वर्क ऑन लिटरेचर रिव्यू and you do extensive study and you have found out the research gap, the problem. You are going to propose some solution for the issue. The description of that problem is solved. It's known as problem statement. Let's see a definition of problem statement. ठीक है. A problem statement is a description of a difficulty or lack that needs to be solved or at least research to see whether a solution can be found. A problem statement क्या होती है कि ये इसमें आप बताते हैं कि मसला क्या है, डिफिकल्टी क्या है, लेक क्या है, what is the issue that is needed to be solved and ये जो इशू है द प्रॉब्लम whether a solution can be found, ये जो मसला है इसको हल भी किया जा सकता है या नहीं. It can also be described as either a gap between the real and the desired or a contradiction between principle and practice. अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने की है कि इसमें क्या होता है कि आप किसी भी डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन है, बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, हाँ जो भी है, उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ प्रीसेट चीज़ें होती हैं जो आप ये समझ लें कि एज्यूम कर ली जाती हैं, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट मैनर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है. इन मैनर्स इट इज assumed that all nodes are cooperating with each other. It is assumed that all nodes are cooperating with each other, but in fact in reality they are not. They do not necessarily cooperate with each other. So this is the contradiction between principle and action, or we can say the desired and reality. ठीक है. अब एक मसला है, हम एक चीज़ है, हम कहते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये प्रीसेट एक गोल है, ये होना चाहिए, ये चीज़ ये व्हाट इज़ डिजायरेबल, लेकिन एक्चुअल में मसला क्या आ रहा है, दिस इज प्रॉब्लम. ठीक है. तो अब कुछ आपको ये बात समझ आ गई होगी. फॉर एग्जांपल अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ये एक डिज़ायर्ड गोल है, ऑब्जेक्टिव आप कह लें, ऑब्जेक्टिव नहीं, एम कह लें, ठीक है. लेकिन इन रियलिटी अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो क्या हम अपने बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे. ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम्स क्या है? दिस इज द होप तो कि कुछ क्लियर हो. तो अब आगे कुछ थ्योरेटिकल किस्म की चीज़ है, लेकिन हम डायरेक्ट जाते हैं कि जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सेक्शन क्या हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ problem statement. If you divide problem statement in three parts, it will be very easy for you to write the problem statement for your research synopsis or
what's the thing, your synapses और proposal. तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है ना उसके तीन पार्ट्स होते हैं, द आइडियल, द रियलिटी एंड कंसीक्वेंसेस. आसान सी बात है, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लो. प्रॉब्लम स्टेटमेंट याद रखिए, इट इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होती, लेकिन आप अपना सिनैप्सिस का या अपना वो जो प्रपोजल का जो टेम्पलेट है वो आप देखेंगे उसमें क्या चीज़ आपसे मांगी गई है. ठीक है, अगर वो आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कहता है तो फिर आप उसका शॉर्ट से लिखें, और अगर डिटेल चाहिए तो आप इसको डिटेल में भी कर सकते हैं. ठीक है, but there are three components or three parts for writing a problem statement. Number one, first, the ideal, describe a desired goal or ideal situation, explain how things should be. As I have told you earlier that we discussed what is the ideal, what is the desired thing, huh? What is the desired goal, what is the thing you are trying to achieve in your research work. ठीक है, पार्ट बी, मतलब आप ये कह लें कि पहले आप क्या करें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, इन 2 or 3 sentences डिस्क्राइब व्हाट इज द आइडियल, व्हाट इज द डिजायरेबल थिंग. ठीक है, इसके बाद क्या है, पार्ट बी पर हम आए, द रियलिटी. Describes a condition that prevents the goal, set, or value in part A from being achieved and realized at this time. Explain how the current situation falls short of the goal or idea. अब पार्ट बी में हम क्या करते हैं, पार्ट बी में you tell what is the contradiction, what is the actually problem, what is the reality prevailing, what the things going on in practice, and in short, what is the problem, what is the thing, what is the thing which is creating hindrance in achieving that goal, in achieving that aim, the desired thing mentioned above. ठीक है, आसान लफ्जों में आपने बताना है कि मसला क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम. अब जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है ना अपने रिसर्च वर्क में, इस पोर्शन में आपने ये बताना है आसान लफ्जों में, 2-3 लाइंस में आप ये बताएं कि ये चीज़ होनी चाहिए या ये चीज़ होती है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपने अगले 2-3 सेंटेंसेस में आपने ये बताना है, 3-4 लाइंस में कुछ चीज़ आपने ये बताना है कि मसला क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम. इन 3 or 4 sentences you tell what is the desired thing or goal, what the things should be, what is the way things should be. ठीक है, in second part you tell actually what is the problem. ठीक है, in third you tell the proposed solution, you tell how the things can be improved, how this problem can be solved. In part C, the consequences identifies the way you propose to improve the current situation and move it closer to the goal or ideal. याद रखें कि मतलब ये जो गोल और ये आइडियल होते हैं ना, ये 100% अचीवेबल नहीं होते, बेहतरी की गुंजाइश रहती है हमेशा. There is always a space for improvement. Mind it, we cannot achieve the ideal or goal 100% or perfectly. There is always some space for improvement. ठीक है, तो आप कभी भी ये दावा नहीं कर सकते कि हाँ जी ये 100% मसला हल हो जाए. हो सकता है आपके प्रपोज्ड सोल्यूशन में कोई और बंदा एक गैप फाइंड आउट करके उस पर अपनी रिसर्च करे. That will be kind of great thing. अच्छा, अब मैं अब आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल. ठीक है, अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू द XY यूनिवर्सिटी मिशन स्टेटमेंट, द यूनिवर्सिटी सीक्स टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ सेफ हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट. Dormitories are one important aspect of that learning environment since
55% of XY students live in campus dorms, and most of these students spend a significant amount of time working in their dorm rooms. ठीक है। अब इसमें ये बताया गया है कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी है और उनकी मिशन स्टेटमेंट क्या है, कि अब बात आ जाती है कि व्हाट इज़ द आइडियल और डिज़ायर्ड थिंग। वो क्या है कि उनके मिशन स्टेटमेंट में ये चीज़ शामिल है कि जी स्टूडेंट्स को एक सेफ हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट हमने प्रोवाइड करना, और लर्निंग हेल्दी एनवायरनमेंट उनको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं कि उनकी जो डॉर्मेट्रीज हैं वो कंफर्टेबल हों, जहाँ पे स्टूडेंट्स उनकी जो जिसे कहते हैं ना कि जिस जगह पे वो रहते हैं वो इतनी कंफर्टेबल हो कि वो आराम से स्टडी कर सकते हैं। अब ये देखें क्या है, एक सेफ हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, और स्टूडेंट्स की जो लिविंग स्पेस है वो उनके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए, जिसमें वो अच्छे तरीके से रिलैक्स माइंड के साथ स्टडी कर सके। अब देखें व्हाट इज दिस, दिस इज द डिजायर्ड थिंग, दिस इज एन आइडियल थिंग, दिस इज द थिंग which we want to achieve or a university want to achieve. This is included in their mission. अब हम इसके अगले पार्ट पर आते हैं। अब इस पार्ट में क्या होगा, इसमें बताया गया कि मसला क्या है। वो तो कहते हैं ना कि एक बड़ा एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, स्टूडेंट्स बड़े आराम से रहे, उनके कमरे उनके रहने की जगह बड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए। ठीक है जी, होनी चाहिए, मानते हैं हम, लेकिन मसला क्या आ रहा है। Students living in dorms A, B, C, and D currently do not have air conditioning units, and during the hot season, it is common for room temperature to exceed 80 degrees Fahrenheit. Many students report that they are unable to do homework in their dorm rooms. Others report problems sleeping because of the humidity and temperature. The rooms are not only unhealthy, but they inhibit students' productivity and academic achievement. अब यहाँ पर जी प्रॉब्लम बताया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि वो जो कमरे हैं उधर गर्मी बड़ी ज़्यादा है, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग यूनिट्स वगैरह नहीं है, एसी वगैरह नहीं लगे हुए हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि गर्मी इतनी होती है कि वो अपना जो होमवर्क है वो नहीं कर सकते। कुछ कहते हैं कि जी हमें नींद नहीं आती, गर्मी की वजह से, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर की वजह से, हॉट टेम्परेचर से हम सो नहीं सकते। अब इससे क्या चीज़ अफेक्ट हो रही है, इससे उनकी प्रोडक्टिविटी और एकेडमिक अचीवमेंट अफेक्ट हो रही है। दिस इज द प्रॉब्लम। The problem is due to hot weather and in absence of air conditioning units, their productivity and academic achievements are being affected as they suffer the sleeping problems and we can say hot weather problems. अब अगली चीज़ आती है जी, ये आपको प्रॉब्लम समझ आ गया। मतलब क्या है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 3 पार्ट हैं। पहले में क्या है कि व्हाट द थिंग यू वांट टू अचीव, व्हाट इज द वे द थिंग्स शुड बी। इन सेकंड पार्ट व्हाट द थिंग्स एक्चुअली आर गोइंग, व्हाट मतलब किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, मसला क्या है। आपने सेकंड पार्ट में मसला बताना है, और अब ये थर्ड पार्ट आता है। अब आप क्या कर सकते हैं, सॉरी जी। अब जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन क्या है। अब पार्ट सी में आप देखें कि इस मसले के नतीजे में कोई रिसर्च वगैरह की गई और उसमें कहा गया कि इसका सलूशन क्या है मसले का। सीधी सी बात है, वहाँ पे एसी लगा दो, एयर कंडीशनिंग यूनिट जो है वो डिप्लॉय करते हैं। अच्छा, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स तो डिप्लॉय करते हैं, कहना तो आसान है, लेकिन इसमें आगे भी कुछ चीज़ें कि ये जो है इकोनॉमिकल ये चीज़ होनी चाहिए। तो आगे से वो कहते हैं कि ये कहाँ से क्या होगा कि यूनिवर्सिटी फंडेड होगा और स्टूडेंट्स के लिए आसानी होगी, स्टूडेंट्स सब्सिडाइज्ड होने चाहिए, एंड इट मस्ट बी लीस्ट एक्सपेंसिव। मतलब जो एक्सपेंसेस हैं ना वो कम से कम होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रॉब्लम द स्टडी प्रपोजेस टू इन्वेस्टिगेट
several options for making their dorms more hospitable. The study planned to carry out an all-inclusive participatory investigations into options for purchasing air conditioners, university-funded, student-subsidized, and different types of air conditioning systems. The research will also consider less expensive ways to mitigate some or all of the problems noted above, such as creating climate-controlled dorms, lounges, and equipping them with better study areas and computing space. अब ये उन्होंने जी कुछ इसके सॉल्यूशंस बताए कि एक तो ये कि वो क्लाइमेट कंट्रोल रूम्स लाउंजेस होनी चाहिए और बेटर स्टडीज एरियाज एंड कंप्यूटिंग स्पेस जो भी अब तो इन लोगों ने ना अब आगे से थर्ड पार्ट में क्या है कि एक सॉल्यूशन बता दिया है या ये बताया है कि ये जो एक इस मसले को हल के लिए जो स्टडी या रिसर्च कंडक्ट की जा रही है वो किस नहज पर किस डायरेक्शन में होगी या क्या चीज़ें उसमें स्टडी होंगी, अब उसमें सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो बताएगा। तो ये जो मैंने वीडियो में ना मैंने जेनेरिक किस्म की चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की है कि ये एक स्पेसिफिक एरिया जो है उससे रिलेटेड ना हो, मतलब ये कि हर डिसिप्लिन के जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अब फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मैंने तो कंप्यूटर साइंस की बात करनी। अब देखिए अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं ना तो अ, आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आप पहले आपने एरिया देखना है, ठीक है। अब एरिया देखा है उसमें क्या है कि हम कहते हैं कि हमारी आइडियल या डिज़ायर्ड चीज़ अगर नेटवर्किंग में तो हम कहते हैं कि जो पैकेट है उसको सक्सेसफुली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना चाहिए, कम्युनिकेशन ठीक होनी चाहिए, उसमें ओवरहेड कम होना चाहिए, डिलीवरी रेशो अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या है, ये डिज़ायर्ड गोल है। अब हम देखते हैं कि इन प्रैक्टिस क्या है, ठीक है। तो इन प्रैक्टिस हम देखते हैं कि जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं फॉर एग्जांपल जो उसमें कुछ राउटिंग इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स में इश्यूज हैं या अब प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो क्या है कि जो फॉर एग्जांपल अगर हम अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोऑपरेशन का इशू होता है, ठीक है। अब वहाँ पे डिज़ायर्ड चीज़ या आइडियल क्या है कि हम ये सपोज करते हैं कि नोड्स के अंदर कोऑपरेशन है, वो कोऑपरेट करते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है वो ड्यू टू सम रीजंस वो कोऑपरेट नहीं कर पाते, ठीक है। अब इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब आपने किस इशू को लिया है, अब ये भी हो सकता है कि आप किसी राउटिंग प्रोटोकॉल को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, आप कोऑपरेशन को इन्फोर्स करना चाह रहे हैं, अब ये आपने इश्यूज निकाले हैं, ठीक है। अच्छा ये जो एनर्जी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको आप ठीक करना चाह रहे हैं, ये भी है। अच्छा ये भी है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस का आपने इशू ढूंढा है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस का इशू इसमें आता है, ठीक है। या ट्रेडिशनल नेटवर्क में क्वालिटी ऑफ सर्विस का क्या है, और अब आपका आगे से प्रपोज सॉल्यूशन क्या है, क्या मतलब आपके माइंड में क्या, अब आप क्या करना चाह रहे हो अपना रिसर्च, आपकी रिसर्च जो स्टडी है वो किस नहज पर किस डायरेक्शन पर है, आप क्या चीज़ इम्प्रूव करोगे। एक चीज़ माइंड में रखो कि जो प्रॉब्लम होता है ना वो बड़े वास्ट लेवल का होता है, ठीक है। उस वास्ट लेवल के प्रॉब्लम में से आप जिसे कहते हैं ना कि आप उसको एज अ होल कवर नहीं कर सकते, आप उसमें से एक स्पेसिफिक चीज़ उठाते हो और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, या उस एक स्पेसिफिक आप समझ लेना एक स्पेस को कवर करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक इशू लिया और मतलब ये चीज़ आपका क्योंकि आपको पता है आपने अपना रिसर्च गैप जो है फाइंड आउट कर लिया, अब आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है। पहले आपने क्या लिखा है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, व्हाट इज़ डिजायरेबल। सेकंड में आप इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, सेकंड में आप डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द इशू यू हैव फाउंड आउट, और थर्ड में आप बताते हैं व्हाट इज व्हाट्स द सॉल्यूशन could be, what would be the solution of that
problem you have found out. Thank you so much for your time, and hope so this video could be of some help, and remember me in your kind prayers, and wishing you best of luck for your third work. Allah Hafiz.